Welcome back student. I am Santosh Misra, your business teacher. And in previous video I have discussed the marketing management. What is the market and who is the marketer and what is the feature of marketing management, what is the process and activity of the marketing management. In this video, I am going to discuss the function of marketing or marketing activities. What are the marketing activities or what are the function of the marketing? So, first is marketing research. Marketing research means gathering the information and analyzing marketing information. First of all, gather the information and after gathering, analyzing all those information. What the customer want to buy, when they are likely to buy, in what quantity do they buy, from where do they buy. कहने का मतलब है कि कस्टमर क्या खरीदना चाहते हैं. Customer wants to buy. What are they wants to buy? When they are likely to buy? कब खरीदने वाले हैं? In what quantity do they buy? How much they are going to buy your product? And from where do they buy? वो कहाँ से खरीदेंगे? ये सारी चीजें first of all gathering all information and after that analyzing those information. Second step is marketing planning. Specify plan for increasing the level of the production. सबसे पहले ऐसा प्लान बनाना है जिससे हमारा क्या हो सके, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट and specify the action program to achieve these objective. तो प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस. एडवांस में सोचना, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसको सेल करेंगे और किस तरीके से हाउ कैन वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव एंड आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. It is all these things are covered in the planning, marketing planning. Third is product designing and development. Marketer must, you can say seller must take decision like what product, which model or size, what will the brand name, packaging and quality level, so that customer needs are satisfied. Why we are doing all these activity such as brand name, packaging, quality label? Why? Because all these activity is done for the customer, satisfying the customer need. तो आप ब्रांडिंग जानते हैं, ब्रांड का नेम, जैसे आप टाइड का बात करते हैं, उजाला नाम ही ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा वाइटनेस को बता रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रांड नेम ऐसा रखिए जो अट्रैक्ट करे. बाइंग एंड असेंबलिंग. फोर्थ इज बाइंग एंड असेंबलिंग. अच्छा, वन थिंग इज मोर, क्वालिटी लेवल. आप 6 सिग्मा की बात सुनेंगे. 6 सिग्मा, बेंचमार्किंग, ये सारी चीजें 6 सिग्मा क्या है? कंपनीज अपने प्रोडक्ट में एरर 99.99% तक कम करना चाहती है. दिस इज कॉल्ड 6 सिग्मा. This will improve the quality of the product and the customer will assure that this product is best.
So this is all these activity are comes under the product designing and development, buying and assembling. Fourth activity is buying and assembling. Raw material for the for the manufacturing of car, raw material like steel, tire, battery, seat and steering wheel are bought and then assembled in the form of a complete product. इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पहले बाई करेंगे, पहले हम बाहर से खरीदेंगे. उसमें भी ये है मेक और बाई डिसीजन, हम खुद बनाएं या बाहर से परचेस कर लें. सारे डिसीजन को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं. पहले बाई करेंगे और सारी चीजों को असेंबल करेंगे. तो कार हो गया, मोबाइल फोन हो गए, ये सारे प्रोडक्ट क्या, कंप्यूटर्स हो गए, ये असेंबल्ड किए जाते हैं. And fifth activity, packaging and labeling. Designing the package for the product and put label on the package. ये पैकेजिंग जो जितना अट्रैक्टिव दिखेगा उसका मार्केटिंग उतनी अच्छी होगी. कस्टमर विल अट्रैक्ट. सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग. After buying and assembling, next function is packaging and labeling. And 6 is branding, creating a distinct identity of the product from that of competitor. Example, Videocon washing machine, Usha fan, Lux soap, Fair and Lovely. These are the branding, example of branding. So now I am going to discuss further topic, concept and philosophy of marketing. So it is a big concept and so student, this concept will be discussed in the next class. It is enough for today. So thank you so much.